वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ द्वादशोऽध्यायः। एवं सततयुक्ता ये भक्ताः स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उपस्थित भगवत
भक्तों के रूप में मेरी अपनी ही आत्माओं। श्रीमद् भगवद गीता भगवान के मुखारबिंद से निकली हुई अमर वाणी है, और जो भी जीव श्रद्धा सहित इस अमर वाणी को धारण करता है, वो जीवत्व को छोड़कर ईश्वरत्व की प्राप्ति करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये जीवात्मा चाहे जिस देश में रहे और चाहे जिस भेष में रहे, गीता सबका सब काल में समान रूप से कल्याण करने वाला एक अनुपम एवं अलौकिक ग्रंथ है।
किङ्करभीतमने गुरुदेव दया करो दीन न जाने हृदि कंदरतामस भास्कर है तुम्ही विष्णु प्रजापति शंकर है परब्रह्म परात् परवेदमने गुरुदेव दया करो दीन जाने गुरुदेव दया करो दीन जाने मनवरण शासन अंकुश है निरवर्ण तरे हरि चाक्षुष है गुणगान परायण देवगणे गुरुदेव दया करो दीन जाने गुरुदेव दया करो दीन जाने कुल कुंडलिनी घूमि भंजक है हृदि ग्रंथि विदारणकारक है मम मानस चंचल रात्रिदिने गुरुदेव दया करो दीन जाने गुरुदेव दया न जाने रिपुसूदन मंगल नायक है सुख शांति बरा भयदायक है दया ताप हरे तव नाम गणे गुरुदेव दया करो दीन जाने गुरुदेव दया करो दीन जाने अभिमान प्रभाव विनाशक है गतिहीन जाने तुम्ही रक्षक है चित्त संगितवन चित्त भक्ति गणे गुरुदेव दया करो दीन जाने गुरुदेव दया करो दीन जाने तव नाम सदा शुभ साधक है पतिता धम्मा नव पावक है महिमा तव गोचर शुद्ध मने गुरुदेव दया करो दीन जाने गुरुदेव दया करो दीन जाने जय सद्गुरु ईश्वर व्यापक है भवरोग विकार विनाशक है मन ये नो
तव श्रीचरणे गुरुदेव दया करो दीनजने गुरुदेव दया करो दीनजने भवसागरतारण कारण है रविनंदन बंधन खंडन है शरणागत किंकर भीतमने गुरुदेव दया करो दीनजने गुरुदेव दया करो दीनजने कापन्द दोषो बहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धम्मसम्मूढचेता यस्येयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम् शिष्यश्चाहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम् You can now slowly and gently open your eyes and know that you are a unique and beautiful spiritual being of pure consciousness, and all you have to do is to shine brightly. You will be helping the world and the universe. Stay blessed. Jai Shri Krishna, Jai Gurudev Maharaj, Jai Geeta Mataji. देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु जय श्री कृष्ण जय गुरुदेव on behalf of Swami Geeta Kiran ji and Guru Bhai Joshi ji, it is an honor for me to extend a very warm welcome to all of you. Thank you so much for being with us tonight. As you know, Joshi ji, Dr. Kapoor Saab is out on vacation, so having said that, I hand it over to you to take it over. Joshi ji, over to you. Jai Shri Krishna, Jai Gurudev to everyone. Today is a special program. In this universe, no one can make an attempt to be happy, peaceful forever, other than human being. For that purpose, human beings like us are very fortunate to have Bhagavad Gita given to us by great saints, in our case, Swami Hariyaji Maharaj.
We study Bhagavad Gita, we solve our personal, spiritual, other many problems, and all the times we find success. All the steps are given in our scripture of Bhagavad Gita. With the advice of Dr. Prasadji in last Thursday, we decided that we will discuss calm, clothes, and love in this session. And very well chosen, these three elements are the main culprits. It was mentioned like those who cannot deal with it will find these three asuri, demonic poetry as the gateway to hell. So we will talk about it, we'll get some enrichment and hopefully deal with calm, clothes, and love. And if we can even get the face of it, we are heading towards Yagyas Karma, as mentioned by Swami Hariharji. With that, I will request in the same sequence like calm, cool, and love, Dr. U. Prasadji to begin today. Calm is the main culprit of all. Dr. Saab. Thank you very much, Joshi ji. As you decided, I shall try to some thoughts on calm today. But before that, my prayer to Bhagwan and Gurudev. Vansi vibhushita kara navanirdaba pītāmbara darunabimbaphaladarostha purnendu sundaramukha arvindanetra Krishna param kimapi tattvamaham na jane ajnanatimiraandhasya jnananjana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Sri Gurave Namaha. Desire, what is this? What is meant by desire? What one understands if somebody talks about calm or kamana, the desire, where it is said, idam me shat iti iksha kam shabdita. I want to attain this. I want to attain this. This kind of desire is called kama. In Bhagavad Gita, we have learned about the word iksha. That is also desire. And this iksha has been put as number one among 7 modifications of Prakriti. Ichha dvesh sukham dukham sangatas chetanadhriti etat kshetram samasena savikar mudahritam. That is verse 6 of chapter 13. This is very significant. Why word ichha has been put among
all the vikar or modifications of Prakriti. We all know that Bhagavan created this whole entire universe. Ishvara being created, Ishvara God, so he created Prakriti, which was in the unmanifest form, Mool Prakriti. In Mool Prakriti, every component that is required for the creation of world or the universe was there, but in subtle form, unmanifest. And when all the modifications started to manifest, the first thing was iksha, desire. That was the first modification of manifest Prakriti. So you can see the importance of the word iksha, importance of the word kam. Adi Shankaracharya puts in his own way in Sutra what is avidya kama karma. Avidya, as you know, is also Maya. That is also Prakriti. He puts in the word avidya, but means same. And the first thing, what happens? Kams comes in. And it is because of desire of the kam, karma takes place. Behind every karma, there is some kam or desire associated. So the ignorance, desire, and action, they go in sequence. Initial issue is that of ignorance, which leads to desire. Sage Vedavyas in Mahabharata, he says, Kam bandhanameva ekam nanyadastiti yah bandhanam काम बंधनम मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय kalapate. Desire is the only cause of bondage. That we are in this world because of our karma. That karma brings desire, and desire leads to the bondage of this, with this verse. Desire is the one. Without, if the desire is taken away, if one is without desire, then one attains Brahma. As soon as this bondage in the form of desire is released, one attains Brahma. So that is the importance, how this desire has put us all tied to this verse, to samsara, and kept us away from Brahma. That has to be realized. It is the biggest enemy. Bhagavan has said many, many places. We'll come to that in a minute. So the importance of this desire is that it is keeping us away from Bhagavan. Brahmarshi Valmiki, his words have been put in by Sant Tulsidas in Ramcharitmanas in Ramayana, and he says, Jahi na chahiu kabahu kachu, tum san sahaj sanehu, vasahu nirantar tasu mana, soraur nij dehu. Beautiful. This is an Avadhi. Those who know Hindi and colloquial language in Hindi, they will appreciate this very much. What he says? Jahin chayo kachu, kabam kachu. कभी भी कुछ भी इसे नहीं चाहिए, तुम सन सहज सने हो, सहज ही बिना सोचे विचारे नेचुरल टेंडेंसी तुम सन सने हो, तुम्हारे साथ उनका स्नेह बन जाता है. जिसको कुछ भी कभी भी कुछ नहीं चाहिए,
स्वाभाविक रूप से ही उससे तुम्हें, भगवान राम के बारे में कहते हैं वाल्मीकि जी, तुम्हारे साथ उसका स्नेह, प्रेम, भक्ति, लगाव हो जाता है। बसहु निरंतरता सुमन, उसके हृदय में आप हमेशा विराजमान रहते हो। सो राहुल निज गेहूं, उसे आप अपना घर समझ के उसके घर में आप निवास करते हो। इन इंग्लिश, an individual devoid of desire has natural tendency to be endowed with tremendous love for the Lord. He feels the presence of Lord within his heart. In Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna has used this word in so many times. No other word has been repeated as many times as the word calm. There are 33 verses in Bhagavad Gita where calm is word is there. If you read chapter 16, there are 9 verses where calm in one form or the other is mentioned. And the most relevant verse we all very well know, Trividam Narakasyedam Dwaram Nashanam Atmanah Kamah Krodhah Tatha Lobhah Tasmat Etat Triyam Tajet. We all know very well, many times we have gone through. These are the 3 gates of entry into the hell. If you have, and Kama is number 1 again here. That leads to Krodha, and of course the Lobha is associated with that. So Bhagavan says, get rid of this. He tells to Arjuna and through him to all of us. Now, can we live without desire? A lot of people talk about, अगर काम नहीं रहेगा तो जिंदगी किस लिए है? कुछ तो इच्छा होनी चाहिए, कुछ चाह होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए, आप रखो इच्छा। So the ichha has been, the calm has been divided into two parts, that book, 2 components. One is पारलौकिक, अगर कामना करनी है तो पारलौकिक कामना करो. And that, what is that पारलौकिक or ultra mundane desire? What is that? To attain salvation, mukti. कामना करनी है तो मुक्ति की कामना करो. कामना करनी है तो भक्ति की कामना करो. To attain bhakti, to attain mukti, for salvation, for Lord's eternal love. If you have desire, let that desire be very strong. And that is one which is paralokik, ultra. But then what happens? We do not do that. We go into the lokik one. Now this ultra or mundane desire has been, it may not be called a desire, although it is classified under desire, but the argument is that in fact it is not really desire. Why it is so? The reasoning has been given. The first thing is that when we desire this lokik desire, when we do that, we want to gain something for ourselves. We want to gain something. But when we ask for salvation, ask for eternal love for Lord, you give up, you surrender. समर्पण भाव होता है, भक्ति का भाव होता है, देने की भावना होती है. उस भावना से अगर करते हैं, then that is not really desire. Also, we all know desire is never fulfilled. You have one desire today. The moment that desire is fulfilled, you long for another desire. So keep on. It can never. It is what is called insatiable. Desire cannot be satisfied. But desire for salvation, desire for love of God, of Lord, is fulfilled, has been fulfilled, and it gets fulfilled. So if something is getting fulfilled, that is doesn't come under category of desire. So अगर कामना करनी है तो मुक्ति के लिए कामना करें, भक्ति के लिए कामना करें. Not for लौकिक कामना, where we do for what? To attain happiness,
सुख की प्राप्ति के लिए और टू गेट गॉड ऑफ अनहैप्पीनेस, दुख के निवारण के लिए। हम जब कामना करते हैं भगवान मुझे ये कष्ट नहीं हो, मेरा ये कष्ट चला जाए, कष्ट को दूर करने के लिए, या सुख मिले, सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, that is the purpose for which one desires, one longs, and one wants to get rid of unhappiness or to attain sukha. That is the purpose of Laukik Kamana. Now, what are the grades of this Kamana? It can be at various grades, starting from minimal to the most severe one. The minimal one is what is called spraha, awareness. Namam karmani limpanti name karma phale spraha. Iti mam vijanati mame. So that is the spraha, means minimum awareness that I am exposed not correctly. That to hide that part, you may like to have some cloth there. You want to survive, for that you have to eat something. So the bare minimum requirement under the civilized world, in the civilized world, you make use of things, that is spraha, that minimum requirement. Then other is asha. You don't have it, but you want to have it. एक मन में आशा होती है मुझे ये मिलता. That is again a second grade. Then asakti, after having gained that object, you don't want to lose it. You want to hang on to. आसक्ति उससे प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है. So along with desire, kamana, there is a asakti to keep it attached with you. You don't want to get that lost, don't want to lose it. That is asakti. Then there is lobh, greed. You want to have more because you have got it, you have possessed it. Now with that possession, you want to add more possession. And that's why it is called greed. And this further serious type of desire is trishna. That is, it not satisfied with what you have got, you seek to have more, more and more. In this regard, one poet, Sundar, has put a kavita like this. He says, ज्यों 10, 20, 50 भये, सत होई हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज करी, तृष्णा अग की अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी. This is a poetry by Sundar, and he defines trishna in that. He says, even after attaining the kingdom of all world, O sinner, fire of your crave will keep burning more and more. Poet Sundar says, O fool, without satisfaction, santosh, your hunger will never be exhausted. Now, the worst one is the yachana, that is the crave. This is the situation where the person wants to have it by hook or by crook. Even he can go to the extent of killing someone or even killing himself because he cannot live without it. Now, what is the root cause of this kamana? From where it comes? How one gets into this affair of kamana or desire? There are some forces from within and there are forces from outside. What is the outside force? Let's divide to two. One is the verse you know, Sankalpa Prabhavan Kaman Tyaktva Sarvana Sesta. Bhagavan says that it is arising out of Sankalpa, the desire comes in.
So the sankalpa comes from where? It comes, the desire comes from where? It comes from sankalpa. And what is sankalpa? It is the subtle, unbridled force within that is from the manifested prakriti. When it becomes come existence, becomes manifest, then there is force behind getting that fulfilled, that impurity, that vikar in the form of iksha gets propelled from within. That is the subtle, unbridled force from within. And that is in the form of then rajoguna. Prakriti ka rajogun prabhavit ho jata hai. When rajogun takes into effect, then there is काम क्रोध. Bhagwan has defined that. काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा vidyena vairinam. He says, Arjun, this desire is born of mode of passion, that is rajas, and that desire is anger, all devouring, most sinful. Know this to be the enemy here. That is the, from within, these two forces, from the manifest prakriti and from development of rajoguna, there is from within. And from outside, the contact of sense object with the sense organ. Once there is contact of sense organ with the sense object, then one gets attached to it, then one is attracted towards it, wants to have it, and the two verses, 62 and 63 of chapter 2 are very famous verses. You all know very well. Well, it says, Dhyayato Vishayan Punk Sangat Se Subhajayate Sangat Sanjayate Kama Kamat Krodho Vijayate Krodhat Bhavati Sammoha Sammohat Smriti Prasanta Buddhina So Buddhina Sat Pranasati. So that this is the contact of sense objects with the sense organ. Now, if we look at this picture, which I often try to keep in mind, that we have the sense organs and we have the sense objects. So as soon as the eye represents one of the sense organs, it can be other sense organ or object can be also any one of them, but here flower is picked up. So the contact of the sense object with the sense, it brings up desire, and it goes on to the mind, and from mind it reacts. So there is from outside. From inside, there is this thought component. This thought component from vritti, and from vritti, this mind gets agitated in the form of rajoguna. So the rajoguna creates effect on the mind from outside and from within, the contact of sense organ with sense object, and mind gets agitated. And if mind is not under control, then the kamana or desire develops. What are the seeds? कहाँ छुपा रहता है? Where does this kamana कहाँ रहता है? इसका रहने का, where is the location? Where it is situated? Where is it? What is the address? At what address you want to go and attack the enemy? So you have to have the address. Where is it hiding? Bhagwan says in chapter 3, verse 40, Indriyani mano buddhi asyadhisthana mujyate etair bhugoyati yesha jnanamavritya dehinam. It is the seat of this desire is senses, the mind and the intellect. In these places, all of these places are affected by rajoguna, and they is the seat of desire. Bhagavan says, at these places, while they are placed, what they cause? They delude the person by veiling his wisdom. This is the mechanism of action.
what does this Rajogun does? It covers it veils the knowledge, Gyan, and this beautiful verse is given here. Avritam Jnana Metena Jnaneno Nitya Vairina Kama Rupena Kaunteya Duspure Naranena Cha. O son of Kunti, knowledge is covered by this constant enemy of voice in the form of desire, which is insatiable fire. So in the form of insatiable fire, this jnana is covered by this lust or calm or desire. So how to overcome that? We have several ways of doing it, and we must have this our mind. When we get attacked by from within or from outside, what can one do to get not affected by kamana or desire? What should do? Number one is avoid contact with the sense objects. When you have got sense object outside, if you have got rasgulla outside, you don't have to be attracted towards it. You may walk along. Something else is there. Move up, move down. And in that way, you can do not get contact with that. If there's no contact, then you may not get affected by it. If you see something beautiful, you get attracted towards it. So the one way to do is to withdraw our senses within so that there is no contact, loss of contact. And the beautiful verse there in verse 58 of chapter 2, Bhagwan says, Yada sangharate chayam urmunga niva sarvasa indriyan indriyarthevyas tasya pragya pratisthita. He gives an example of tortoise where he says, when he withdraws all his sense organs from sense objects, that is the one thing which everybody can practice. It is not a very big sadhana. You can get, if the music is going on and you feel like attracted, you can walk along, you can cut down the contact of sense object with the senses. That is the one can do. But if has entered the mind, if the senses, if the contact we are not avoided and it has reached to the mind stage, then what one can do? Renounce it as if it has not reached the mind. What the verse beautiful here is, Prajahati jada kaman sarvan partha manogatan. One way is to prajahati jada kaman sarvan kaman. Not one, not two, all desire. If it has already entered the mind, manogatan, you prajahati, you renounce them completely. There is a hati, jahati and prajahati. I don't want to go in explanation, it will take a long time. But the message here is that if one thing is you can contact, मन से हटा दे, अगर मन में पहुंच गया तो as if आपने उसको इग्नोर कर दिया. If it has reached the mind, you see that you renounce it. You don't entertain it. Let that go away. Still it has gone in, then you may atmaneva manah, you remain satisfied in the self by the self. This is again, it requires a lot of explanation, but means that you have been able to make that desire non-entity, that it doesn't come in, it doesn't exist. You are attached to the Brahma. In that case, you avoid this thing. This has not disturbed you. But even if that happens, then what you do? You control over the sense organs. You train your sense organ in such a way that it doesn't disturb you. Yatato yati kaunteya purushasya vivastitah indriyani pramathini
haranti prasabambena tani sarmani sanjamya yukta asid matpara vasehi yas indriyani tas pragya pratisthita. Turbulent organ violently snatch away the mind. That desire, force of desire is very strong, very powerful, and it tries to disturb the mind and the intellect. But Bhagwan says you have to train your mind in such a way that that force is not allowed to disturb your mind. Now, beyond that, what one can do is to raise the threshold of tolerance. And the beautiful verse here is Apurjamana Machala Pratishta Samudramapa Prabhusanti Yadvat Tadyatva Kamayam Prabhusanti Sarve Sasanti Mapnotina Kama Kami. He says as the waters of different rivers enter the ocean, which though full of all sides remain undisturbed, you already have put your mind in such a level that all kinds of desire, it may come from here and there, it will not disturb your mind. The important point here is sasanti mapnoti na kamakami. If you are kamakami, you can never have santi, peace. It is, if you want to have peace, then you have to get rid of desire. Just in summary, let me summarize what I have said. It is the mind is the crucial part in the body which gets bombardment from outside. The contact of sense organs, sense objects attacks the mind. You have from within the internal forces, subtle tendencies, rajogun, which through manabuddhi, buddhi, chitta or ahankar, they are there in rajoguni, that attacks the mind. So these way, there is attacks from outside and inside. But what one can do is to withdraw your senses, avoid the desire causing disturbance to the mind. You control your desire. You raise the threshold of mind in such a way, remain absorbed in the Brahma. Then you will be able to overcome this. Vishaya vinivartante niraharasya dehina rasavarjam rasopyasa param drastva nivartate. You may avoid the sense organs coming in, but within mind you maybe have rasa of that, but that will go away if you are absorbed in the cells. In conclusion, I would like to say that desire is our worst enemy, must be dealt with for peace and tranquility of mind. Vihaya kaman yasarvan puman sarati nispraha nirmamo nirahankara sa santi madigachati. If that man attains peace, who after rejecting all desire, must reject it, moves about free from hankering, without the idea of me and mine, and devoid of pride. Manas, in Manas, again Tulsidas says, Kam achat sapanehu sukha nahi. If you have a kama, even in dream you cannot have sukha. So if you want to have a sukha, ananda, get rid of desire completely without a trace of it. Thank you very much. I will stop. I hope I have not taken too much of time. Jai Sri Krishna. Jai Gurudev. Thank you very, very much, Prasad. You have taken these two very well. I appreciate so much. And in sequence, next topic is growth. And I humbly request Murti Maharaji to share your feeling about growth. We all know it is also a very bad enemy of us. So, Murtiji, aapke liye, please. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे
जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्णा। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, वंदन और अभिनंदन। और अभी बहुत सुंदर बड़ी विस्तृत व्याख्या प्रसाद जी ने काम के विषय में की। और गुरु जी हमेशा दो चीजें कहा करते थे, 3 काम जीवन में कभी नहीं छोड़ने हैं और 3 काम जीवन में कभी नहीं करने। उसके लिए 18वें अध्याय में कहा, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणः। यज्ञ दान और तप, ये 3 ऐसे काम हैं जो मनुष्यों को भी पवित्र कर देते हैं। और 3 काम जीवन में कभी नहीं करने हैं। 16 अध्याय में भी जैसा प्रसाद जी ने कहा, त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी जैसा प्रसाद जी ने कहा, कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। दूसरे अध्याय में बड़ी सुंदर ढंग से भगवान ने बताया कि आसक्ति, आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोह। तो काम जो है अभी बताया रजोगुणी प्रवृत्ति है और सम्मोह तमोगुणी प्रवृत्ति है। लेकिन जब दोनों मिल जाती है तब वो बन जाती है क्रोध। क्रोध के विषय में जरा कल्पना करें कि अगर क्रोध आ जाए तो क्या होता है। महाराज जी कहा करते थे कि क्रोध आ जाए किसी को, उसी समय उसके सामने दर्पण कर दो, स्वयं डर जाएगा अपनी शक्ल देख करके। जब क्रोध आता है तो मुठियां भिज जाती हैं, चेहरा तमा जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। और उस समय हमारी जो तार्किक शक्ति वो समाप्त हो जाती है और उस समय हम न कहने योग्य बहुत सारी चीजें जो है वो कह जाते हैं। अगर इसका क्रोध के आवेश में बड़े बड़े भयंकर काम भी हो जाते हैं। अगर हम जेल के अंदर जाकर के कैदियों के अंदर उस क्रोध का रूप, हम उसका परिणाम देख सकते हैं। क्यों? क्षणिक क्रोध से वो कितने बड़े बड़े मर्डर करके और फिर जेल में चले जाते हैं। तो सबसे जरूरी है इस क्रोध को, लेकिन क्रोध भी जरूरी है। क्रोध भी देखिए, जो है काम भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है, लोभ भी जरूरी है। तीनों बहुत जरूरी है। किस पे करना है काम? किसको? भगवान का मैया सक्त मना पार्थ। आसक्ति तो हो लेकिन किससे हो? भगवान से हो। क्रोध किस पर हो? अपनी बुराइयों पर क्रोध हो। लोभ किसका हो? भगवान के नाम के लिए लोभ हो, है ना। तुलसीदास जी ने कहा, कामी नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। यानी जैसे लोभी नोट गिनता रहता है, आज 10 है, आज कल 100 हो जाए, 100 है 200 हो जाए, ठीक उसी प्रकार से आज हमने 100 बार भगवान का नाम लिया, कल हम 200 बार लेंगे, परसों 400 बार लेंगे। लोभ होना भी जरूरी है। इसी प्रकार से क्रोध हमें जब भी गलत काम करें तो हमें उस पर क्रोध आना चाहिए, नहीं अब ऐसा नहीं करेंगे। आसक्ति, भगवान ने कहा जैसे कामी पुरुष एक नारी की तरफ जिस भावना से दिखता है, ठीक उसी भावना से हम भगवान के प्रति अपने आसक्ति रखे, भगवान से हम जुड़े रहे। तो ये क्रोध भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब समुद्र से भगवान ने रास्ता मांगा पार जाने के लिए और 3 दिन हो गए और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो भगवान को क्रोध करना पड़ा। कहा जल विनय न जल जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोपतम भय बिन होए न प्रीत। तो वहां पर भी भगवान का क्रोध करना आवश्यक था। तो हम ना सोचे कि क्रोध बुरा है। क्रोध की अलग अलग मात्राएं हैं, अलग अलग उसके रूप हैं। माँ बच्चे को क्रोध करती है, उसके कल्याण की कामना के लिए करती है, उसको मारती है, थप्पड़ भी मार देती है, गलती करता है, उस समय माँ का क्रोध है। वो उसकी भावना जो होती है वो बच्चे को संभालने के लिए, बच्चे को सही रास्ता दिखाने के लिए ये माँ करती रहती है। तो इस प्रकार से क्रोध
के विषय में जब हम क्रोध करते हैं, उसका परिणाम ये होता है हमारा शरीर के अंदर का रक्त जो है वो धीरे धीरे विषैला हो जाता है। और उस समय कहते हैं कि एक टेस्ट किया गया कि एक आदमी को बहुत तेज का क्रोध था, उसको बहुत गुस्सा आ गया था। उस समय उसके शरीर से रक्त निकाला गया और एक खरगोश को दिया गया, वही रक्त, वो खरगोश पागल हो गया। यानी क्रोध में जो है वो हमारे शरीर को विषैला कर देता है, हमारे शरीर के अंदर जहर घोल देता है। क्यों? मीरा को इतना जहर दिया गया, मीरा नहीं मरी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केवल अमृत था, उसके अंदर भक्ति का जो अमृत प्रवाहित हो रहा था। जब अंदर अमृत होता है तो बाहर का विष कभी भी हमारे ऊपर असर नहीं कर पाता है। तो इसलिए, और सोक्रेटिस को दिया गया, सोक्रेटिस के जीवन का अंत हो गया, लेकिन मीरा का नहीं हुआ। उसका कारण यही था, मीरा क्रोध से बहुत दूर थी, केवल राम के, केवल कृष्ण के भजन में लगी रहती है, इसलिए उसका जीवन जो था वो अमृत में बन गया था। और इतने सैकड़ों वर्षों के बाद भी आज हम मीरा को याद करते हैं, आज उसके भजन हम सुनते हैं। तो क्रोध के लिए भगवान ने, क्रोध जैसे भी बताया अर्जुन ने कि कामना जब पूर्ण नहीं होती है तब क्रोध आता है ना। तो कामना को पूरा करना बहुत मुश्किल से बताया, रक्त बीज की तरह हमारी कामनाएं, तो जैसे रक्त बीज जब एक बूंद गिरती थी धरती पर, फिर एक नया राक्षस निकाल आता था, ठीक उसी तरह से हमारी एक कामना पूरी होती है, तुरंत दूसरी निकल आती है, पूरी नहीं होती है तभी हमको क्रोध आता है। हमने कई बार वो लाइनें सुनाई है कि चाह जो है, इच्छा है, जिसकी बात हो रही है कि वो क्या होता है, चाह आने से रुपया बनाने लगी और रुपए से नोट बनाने लगी, फिर नोटों से कोठी बनाने लगी, फिर कोठी में मोटर को लाने लगी, फिर मोटर से होटल में जाने लगी और होटल में बोतल खुलवाने लगी और बोतल से बालाएं आने लगी, फिर बालाएं बला बन के खाने लगी। तो वो जो एक चाह है, एक इच्छा है, वो धीरे धीरे जो हमारे विनाश का कारण बन जाती है। तो वो सविता जी ने बताया उसको दूर कैसे किया जाए, उसके उन्होंने अभी बहुत सारा विस्तार से उसके विषय में दूसरे अध्याय में, और फिर उसे कुर्मंगानियों सर्वसा उसका भी उदाहरण दिया, फिर आपुरे मानव का भी उदाहरण दिया। तो ये, और क्रोध को अगर शांत करना है तो शांति से ही क्रोध शांत हो सकता है। जब तक मन शांत नहीं होगा हमारा क्रोध कभी नहीं, क्रोध क्षमे न चाहती, शांति से क्रोध को जीता जा सकता है। क्रोध जब आ जाए तो हम मौन हो जाएं थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारी जो विवेक शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। तो क्रोध जब आ जाए तो हम मौन हो जाएं थोड़ी देर, ठंडा पानी पिए और फिर उस पर विचार करें कि आखिर क्रोध आया तो क्यों आया। बहुत सारे यही एक रीजन, यही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम आने वाले क्रोध को, क्योंकि जब क्रोध आता है तो सब कुछ अस्त व्यस्त होता है। जैसे एक भैंस जब तालाब में जाती तो सब कुछ गंदा कर देती है, उसी प्रकार से जब क्रोध अंदर आ जाता है तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। चीजें लोग फेंकने लगते हैं, शीशे तोड़ने लगते हैं, ग्लास तोड़ देते हैं, सामान घर का फेंक देते हैं। ये सब अस्त व्यस्त क्यों हो जाता है? क्रोध के कारण। तो और लेकिन जब ज्ञान होता है तब ये क्रोध शांत हो जाता है। सरस्वती की सवारी क्या है? हंस। हंस खेल विवेकी है, वो जानता है सही क्या है और गलत क्या है। और तो इसलिए हम क्रोध को अपने विवेक शक्ति के द्वारा हम क्रोध को शांत कर सकते हैं। तो गीता के अंदर ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए कि, क्योंकि गीता की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले भगवान अर्जुन तो बहुत उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन भगवान ने क्या किया? गीता की शुरुआत क्या से हुई? तम उवाच ऋषिकेशा प्रसन्न एव भारत। गीता की शुरुआत भगवान ने हंसते हुए की, क्रोध में नहीं की, गुस्से में नहीं की, निराश होकर नहीं की, अर्जुन को डांटते हुए नहीं की। तो उन्होंने क्या किया? प्रसन्न एव भारत, यहाँ से गीता की शुरुआत हुई। और अंत में 18वें अध्याय की
54वें श्लोक में भगवान ने कहा, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मैं भक्ति लभते पराम। पराम भक्ति कब मिलती है? जब प्रसन्न आत्मा, जब तक हम प्रसन्न है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। ये भगवान ने बताया भक्ति के प्राप्ति का, भक्ति के मार्ग पर चलने का सबसे अच्छा तरीका है हम हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास करें। प्रसन्न कब रहेंगे? जब हम अपनी कामनाओं को अपने वश में कर लेंगे। प्रसन्न हम तब रहेंगे हर परिस्थिति से हम समझौता करना सीख लेंगे। अच्छा है या बुरा है, जब वो हमारी समझ में आ जाएगा कि जो मिला है ईश्वर की कृपा है, जो भी मिला है हमारे फायदे के लिए मिला है, जो भी मिला है हमें भगवान ने दिया है, कुछ ना कुछ उसके पीछे कोई उसका मेरे हित की बात सोच करके ही परमात्मा ने दी है। तो इसलिए गीता की शुरुआत प्रसन्नता से हुई, अंत में भी भगवान ने प्रसन्न ही रह करके बात समाप्त की है। तो इसलिए सबसे जरूरी है हम क्रोध को जहां तक हो आने ही ना पाए, है ना। जैसे हम दरवाजे पर स्वागतम तो लिख देते हैं ना, लेकिन स्वागतम किसके लिए होता है? रिश्तेदारों के लिए, संबंधियों के लिए, चोर डाकुओं के लिए नहीं स्वागतम होता है ना। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर अच्छे विचार आए, अच्छी कामनाएं आए, लेकिन ये जो है विकार हमारे अंदर उस चोर डाकुओं की तरह प्रवेश न करने पाए। जब ये हम कर लेंगे, इन विकारों पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। और उसका एक ही माध्यम है, गीता पढ़ते रहें, गीता सुनते रहें, सत्संग करते रहें, है ना। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और ये जो हम कर रहे हैं, ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम जैसा भी बहुत कुछ ज्ञान आज हमने अथाह ज्ञान मिला प्रसाद जी से, इतनी गहराई से उन्होंने काम की चर्चा की, तो वो सारे लाभ हमें तभी मिल सकते हैं जब हम सत्संग में जाए, अच्छे लोगों के साथ रहें, ज्ञानी पुरुषों के साथ रहें, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो इसलिए काम क्रोध लोभ ये सारे सगे सगे भाई हैं, एक आता दूसरा आ जाता है, तुरंत ही तीसरा भी आ जाता है। तो इनको हमें अपने जीवन से कोशिश यही करें कि हम उनके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करें। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। 10 मिनट बोलना था। Now I want to request our very dear friend Ramesh Kemlani ji to please turn on your camera and your unmute. And आप बिजनेसमैन रहे हैं अपने लाइफ में, तो आपको तो पता है कि हाउ टू कंट्रोल लोभ। यू आर सच ए डिवोटी ऑफ भगवद गीता, तो आपके हाथ में लोभ का इश्यू आया है। इस लोभ से बचने के लिए हम पर कृपा करो कि कैसे डील करें। रमेश जी, समय आपके पास है, आज हम ज़्यादा समय ले लेंगे तो डोंट हेजिटेट, योर 10 मिनट्स आर गारंटेड। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम 10 मिनट नहीं लेंगे, सिर्फ 5 मिनट लेंगे आपसे आज। कृपा आपकी। और इस 5 मिनट में सिर्फ 2 अक्षर बोलना चाहते हैं कि 16वें अध्याय में ये त्रिविधा अक्षर जो भगवान ने लिखा है 21 श्लोक में, थोड़ा थोड़ा सोचिए। सबसे पहली बात तो हमको भगवान गुरुदेव भगवान के रूप में हमको मिले हैं, ये हमारा बहुत भाग्य है। गुरु ने फिर हमको भगवत गीता हाथ में दी, कितनी अपार कृपा हुई प्रभु की। और फिर हम लोग उस गीता के अंदर गुरु ने हमको भेजा है कि बेटा ये पढ़ो। भगवान का हम लोग ने कहना माना। कहना मानने के बाद जब अंदर गए तो पता चला ये तो समुद्र से भी गहरा है। आप थोड़ा सोचिए, अगर आपने जो अभी बोला कि तुम्हारा ये प्रवचन है लोभ के ऊपर, तो जो इंसान गीता के अंदर जाएगा तो उसी को तो मालूम पड़ेगा ये काम क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है। भगवान ने
इस अध्याय के इस श्लोक को त्रिविधा कह के इतना मुझे गहरा लगता है। त्रिविधा नरक का द्वार है ये। गुरु हमको नीचे से ऊपर ले जाता है, अधोगति से परम गति पे लेके जाता है, और हम इंसान क्या करते हैं? डूबते जाते हैं त्रिविधा में। और भगवान ने साफ अक्षरों में लिखा है, अगर त्रिविधा के अंदर जाना है तो अधोगति में जा रहे हो, ये सोच लो। अभी यहाँ अधोगति है इस लोक में, तो परलोक में क्या मिलेगा? वहां क्या परम गति मिलेगी? वहां पर भी परम अधोगति मिलेगी। तो यहाँ पर अहो भाग्य, हमारे गुरु ने हमको नीचे से ऊपर उठाने की कोशिश की है, लेकिन हम बार बार नीचे गिर जाते हैं। गुरु फिर ऊपर उठाते हैं, फिर हम नीचे गिर जाते हैं। और बार बार लिखा है, अभ्यास करने से आप नीचे से ऊपर पहुंच सकते हो। इसमें सबसे प्यारी बात यह है कि 16 अध्याय के जो 3 श्लोक पढ़ता है, जिसके अंदर 26 गुण है। हम नहीं बोलते आप 26 गुण के 26 गुण अपने अंदर डाल दीजिए, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है 26 गुण डालना। एक गुण तो डाल सकते हैं। सबसे पहला गुण क्या है? अभयम है। तो बहुत सारी चीजें हमारा भय दूर कर देता है। गीता माता हमारी भय दूर कर देती है। तो ये सब जब जब गीता हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को मालूम पड़ता है कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी सब लोग, हम लोग 20 जने 25 जने हर थर्सडे को, अमेरिका के टाइम पे अभी फ्राइडे को सुबह सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? कि कोई एक अक्षर हमारे दिमाग में चला जाए जो मेरा कल्याण करे। यू प्रसाद जी इतनी मेहनत करते हैं, बार बार समझाते रहते हैं, गीता का एक एक श्लोक के बारे में 10 बार बोलते रहते हैं। मैं तो इतने सालों से सुनता आ रहा हूँ। क्या है ये हमारा भाग्य है, हमारा भाग्य उदय हो रहा है। हम अधोगति से परम गति पे जा रहे हैं, क्योंकि गीता के श्लोक जो गुरु की भगवान की वाणी है, वो हमारे कान में स्वर्ण करके जा रही है। तो आज का आपको बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, ये टॉपिक दिया है हमारे पूज्य श्री जोशी जी ने। लोभ लोभ बहुत प्यारी चीज है, हर इंसान को प्यारी चीज है, और होनी भी चाहिए। क्योंकि काम क्रोध लोभ ये तीनों जो है तो नरक के द्वार। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है तभी तो सब लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो हम सबको यही सलाह देंगे कि आप भले यूज करो, काम को यूज करो, क्रोध को यूज करो, लोभ को यूज करो, लेकिन इन तीनों में एक चीज मत करो। वो क्या है? काम है तो कामी मत बनो, वो अधोगति में लेके जाएगा आपको। लोभ है तो लोभ करो, कोई दिक्कत नहीं है, हर इंसान के नेचर में है, उसके ब्लड में है। लोभी मत बनो, लोभी आपको अधोगति में लेके जाएगा। क्रोध है, भले करो, बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, शानदार अपने आप को है। क्रोधी मत बनो, कामी मत बनो, क्रोधी मत बनो, लोभी मत बनो। अगर आपने ये 3 अपने आप को संभाल लिया तो आप अधोगति से बच जाओगे और परम गति पे पहुंच जाओगे। और मेरी यही एक सलाह है, इन तीनों से बचने के लिए प्रभु का शरण के जो एक श्लोक है, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम, भगवान के शरण में चले जाओ ना। जब आपको पता है ये रास्ता हमको परम गति पे लेके जाएगा, तो क्या क्या नुकसान है वहां? प्रभु जैसे इधर चले जाते हो काम क्रोध लोभ में, बहुत अच्छा लगता है, सुबह से रात तक उसमें पड़े रहते हैं। तो वहां से ट्रांसफर होके भगवान के चरणों में चले जाओ, वहां पर आपको गति मिल जाएगी। आपका जो गीता का ये जो आप पढ़ रहे हैं रोज सुबह से रात तक,
सारा प्रवचन सुनते रहते हैं, बहुत आनंद आता है। और पढ़े और पढ़ें और पढ़ें। 12वां अध्याय कितनी बार आप पढ़ चुके हो, तो बहुत आनंद आता है। सत्संग करते हो, कितना आनंद आता है। आप बैठे रहते हो, जोशी जी हमको बुलाए, हम बात करें, कितना आनंद आता है। तो आप भगवान के शरण में चले जाओ। जैसे 12वें अध्याय के 39 गुण हैं, वैसे ही 16 अध्याय के ये 3 श्लोक है, में 26 श्लोक है। आप कोशिश करके एक एक करके आप दोहरा, क्या क्या भगवान इन 26 श्लोकों में कह रहे हैं। तीन में से निकल के 26 में चले जाओ। और 26 में भी नहीं जाना चाहते हो तो भगवान के शरण में आ जाओ। मामेकम शरण भज, आपकी गति हो जाएगी। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। As a matter of fact, our next international conference will discuss about chapter 16 and mostly verse 21. And friends, let's face it, we all want to be happy. Whatever happens, we want to be happy. Whatever we do, we want to be happy. Then we have to decidedly choose the route that takes us to the destination of happiness. And for sure, if our roads take us to different directions of absolute poverty, it will never happen. If our roads take us to Devic poverty, it will happen. We are on the right path. We have Bhagavad Gita, the ultimate treasure handed to human beings. With that, I want to sincerely thank Dr. Prasad ji, Murthy Marwasa ji, and our very dear friend Ramesh ji. And thanks to Swami Geeta Kiran ji for helping us. I'll take one more minute to discuss one of the attendees, Geeta Lalani ji from Panama, was visiting Thailand, Bangkok, where she met Swami Geeta Kiran ji. And Swami Geeta Kiran ji gave a very practical demonstration to heal her relatives. And she sent me the clips of that, which I will send it to you, and were very effective. So thank you very much, Geeta Kiran ji. Your style and the power of the spirit has given you capability to heal others so successfully. I really like that very much. And friends, on 25th, there's a full moon, which is a very regular event from Bangkok, Thailand, a special meditation, full moon meditation conducted by Swami Geeta Kiran ji. All of you have received it through short satsang group. Please join. It is in the evening in Thailand, so it will be in the morning in US. We will all see you. I'm coughing simply because I'm recovering from the flu. I'm okay though. With that, Jai Shri Krishna, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Jai Shri Krishna, Jai Shri Krishna, everybody. Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय Jai श्री Shri कृष्ण। Krishna.